Hello everybody, welcome back to the channel. This is Bhole Digital. मैं हूँ भावना. This is गोवा मस्ती डे 3 अगर मैंने कल की फ्लाइट मिस नहीं की तो. Right now we are at the beach, just enjoying. जैसे कि आपने देखा कि होटल से सिर्फ 10 कदम चलने पर ही बीच का ओपनिंग है. हालांकि यहाँ पर शैक्स वगैरह नहीं है, बट इट्स स्टिल द ब्यूटीफुल बीच. एंड अगर आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो देखिए जहाँ बनारस में हमने ड्रोन क्रैश कर दिया था. हाल फिलहाल कोशिश हो रही है ड्रोन को रिपेयर करने की, टू सी वेदर इट स्टिल वर्क्स और नॉट. खाली तार संभालो ऊपर. क्या गया अभी? go. So that was the problem. जो प्रोपेलर है जो बनारस में टूटा था क्रैश करके वो अब तक टूटा हुआ है. मुझको लगा था जब मैंने देखा था कि ठीक ठाक है, उड़ पाएगा ड्रोन, बट ऑब्वियसली नहीं. इसको रिपेयर करने की सख्त ज़रूरत है. तो अगर बॉम्बे में आप किसी को जानते हैं जो ड्रोन रिपेयर करता है, स्पार्क ड्रोन, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए. सो दिस इज़ बीन अनइवेंटफुल. आई गेस लेट्स वॉच द सनसेट. बेटा फिर से टकराएगा. पीछे कार है, दीवार है. So finally we managed to fly the drone, but कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अभी भी दिखा रहा है. So I still need that repair person. No, I'm shooting. So much effort. No, I'm too weak. Come on! Go Goa! Go Goa! मैं हम बिहार से आया. हाँ. यूरेनियम के साथ आया. Footprints in the sand of time.
बिकॉज इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। मैंने खुद इतने सालों में गोवा में 1 से ज़्यादा एक्सीडेंट देखे हैं बीच पर। कई बार तो थोड़े बच्चे गुम हो जाते हैं बिकॉज कभी हाथ छूट जाता है, कभी कुछ। नॉट टू एनीवेज, ऐसी बातें नहीं करते हैं। अच्छा माहौल है, अच्छा हॉलीडे है, गोवा की मस्ती है, बट अगेन रिमेंबर बी बाई केयरफुल। I hope you guys enjoyed the sunset in Goa as much as I did. हाँ, इतने beautiful sunset के बाद now let's go head out to eat something. By the way, vegetarians के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है कि गोवा में अभी आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी तादाद में प्योर वेज रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं that you don't even have to look. हर गली में, हर कोने में, हर रोड पे आपको प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स ही मिलेंगे। So I think let's try something South Indian today. So like I said, it's time to eat some South Indian in Goa. Don't ask me why, just. ये है yummy masala dosa. You can enjoy South Indian food anywhere. कोई भी रेस्टोरेंट में आए हैं तो फिल्टर कॉफ़ी तो बनता ही है, एंड फिल्टर कॉफ़ी इज़ यम। आई मस्ट से खाना इतना यम नहीं था, but coffee is really nice. I really like the coffee, so cute. एकदम परफेक्ट साइज इतनी ही कॉफ़ी पीनी चाहिए। It's time again to hit the shack, so let's go. अच्छा अभी भी वही रास्ता लेके हाँ? अरे ये स्टॉल्स बना दिए। प्यार है, भुट्टा तैयार है। आजा मैडम, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, भुट्टा खा के जाओ हमारा। कहो ना प्यार है, भुट्टा तैयार है मैम। अच्छा, और सिर्फ ऋतिक रोशन? मजा नहीं आया खाने में तो रिपोर्ट लिखा देना थाने में। हो गया मैम, बस हाँ। नहीं सोचो, मैं आ रही हूँ। पानी मैम, मैंगो, पाइनएप्पल, फ्रेश लाइम सोडा। हेलो मैम। रुको आ रहा है।
कलंगुट में इस वक्त सारे शैक्स बंद है. आई होप दे ओपन इन नवंबर. आई एम नॉट श्योर बिकॉज इट्स ऑलरेडी अक्टूबर. अभी तो सब कुछ बंद है. सो आई गेस लेफ्ट विद नो अदर चॉइस बट टू हेड बैक टू बागा.